हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स मैंने आपको बता दिए थे, उसका प्रॉपर्टीज बताई थी। सो वो टॉपिक हमारा वहीं पे खत्म हो गया। हाँ, रहता क्या है? फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या फंक्शंस आए इसके? सो फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, देखो फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन के? फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। क्या करेगा? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। सेल की शेप को मेंटेन करेगा, उसको एज सच इंटैक्ट रखेगा। सो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड फंक्शन क्या आ जाता है? दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटेक्शन टू साइटोप्लाज्म बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारी सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? नेक्स्ट फंक्शन क्या आ जाता है? दैट इट हेल्प्स टू इनटेक द मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड। क्या करेगा? द मटेरियल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर जो मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे उनको ये अंदर लेगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस which is called as endocytosis. So third important function is what? Helps to intake the materials from outside to inside, and the process is called as endocytosis. Endocytosis. इसी के साथ अगर हम देखें तो अगर वो अंदर लेने में हेल्प करवा रहा है तो इट आल्सो हेल्प्स इन द आउटटेक ऑफ द मटेरियल। क्या करेगा? इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? इट इज अ प्रोसेस through which the waste material gets secreted out of the cell. So helps to secrete the waste material out of cell, and the process is called exocytosis. और क्या फंक्शन आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? दैट इट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ द मटेरियल्स। मटेरियल, टू टाइप ऑफ द मटेरियल, बोथ फैट soluble as well as water soluble. So passage of material inside outside. What it mean? It means अगर वो अंदर से बाहर छोड़ रहा है तो बाहर से अंदर भी ले आ सकता है। किसकी वजह से होता है? होता किसकी वजह से? मैंने आपको बताया था that this plasma membrane is semi permeable. ठीक है, क्या होगा? It allows the movement of the substances inside the cell. और भी काफी सारे फंक्शंस आ जाते हैं इसके, that sometimes it forms the structures or it forms its own structures like mesosomes. क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके मेसोसोम्स बनाता है, and these mesosomes help in the cellular respiration. So these are the functions of plasma membrane. Next topic अब हम अपना स्टार्ट करेंगे. The topic is cell wall. आज हम क्या पढ़ेंगे? Cell wall. Cell wall. What is cell wall? Cell wall is the rigid protective outer covering. क्या होती है? This is the rigid protective outer membrane present outside the plasma membrane or cell membrane. Function क्या आ जाता है इसका? The main important function is that it provides protection. क्या करता है ये? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ. इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, एंड द थर्ड इज इट एक्ट्स एज द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्या डिस्कस
डिस्कस करेंगे अभी हम सेल वॉल में that who discovered the cell wall. So next point is discovery. Who discovered the cell wall? So the credit goes to the Robert Hooke. रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक, हमने जब सेल पढ़ा था उसमें भी हमने बोला था कि रॉबर्ट हुक ने किया. एक्चुअली हुआ क्या, जब मैंने आपको जब इंट्रो दिया था अबाउट द सेल, मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया. उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड अंडर माइक्रोस्कोप दीज हॉलो स्ट्रक्चर्स. उन्होंने इसे हॉलो स्ट्रक्चर्स देखे in the slice of the cork. Slice of cork. And what he found that these cells are dead. ऐसा स्ट्रक्चर देखा. टिपिकल अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो उन्होंने हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स देखे कुछ इस तरह से. Actually these cells were the dead. So इन सेल्स के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं था, कोई न्यूक्लियस नहीं. उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने सिर्फ आउटर लेयर देखा. सो व्हाट इज दिस? द आउटर लेयर व्हिच वी फाउंड इज द सेल वॉल ऑफ डेड सेल्स. सो दैट इज व्हाई द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल goes to Robert Hooke. Okay, so who discovered the cell wall? Answer is Robert Hooke. Now next point is what? Its composition. कंपोजिशन पढ़ने से पहले अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि सेल वॉल प्रेजेंट किसमें होती है. जब हम सेल्स की स्टडी कर रहे थे, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें भी मैंने आपको बताया था दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ठीक है. सो इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक सेल. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन फंजाई or fungal cells. Present also in some protistus and mainly found in plant cells, all plant cells. So these are the cells where cell wall is present. Now composition. Composition में क्या आ जाता है? अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब मैंने आपको बैसिलाई का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था. उसमें मैंने आपको बताया था that the prokaryotic cell, the cell wall of the prokaryotic cell is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. Peptido means protein and glycan means carbohydrate. So it is made up of both proteins and carbohydrates. In case of fungi or in case of fungal cells, it is made up of chitin. Chitin are actually these are homopolysaccharides. Homopolysaccharides. And the third, that is plant cells. अगर हम plant cells की बात करें, so the composition is very important. Composition क्या होती है plant cell में cell wall की? It is made up of cellulose, hemicellulose, pectic, water, proteins, lipids and other substances. Other substances मतलब काफी सारे कई substances आ जाते हैं, उनकी डिपोजिशन हो जाती है. These other substances are suberin, lignin, xylem and so on. So this is the composition of composition of cell wall in plant cell. क्या होता है अगर हम इसकी और डिटेल स्टडी देखें तो this cellulose is made up of actually 6000 D glucose molecules. 6000 D glucose molecules. These molecules combine to form one cellulose molecule. 6000 molecules of the glucose, which glucose? D-glucose. They combine to form one cellulose molecule, and this cellulose molecule combine to form micelles. These micelles then further combine
combine to form microfibrils and they further form macrofibrils. So glucose, then they form cellulose, micelle, microfibril, macrofibril. अगर हम हेमीसेलुलोज का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होगा? These macrofibrils are formed. The difference is only their direction और their placement कि कैसे वो present होंगे, ठीक है? So actually this cellulose, from this cellulose hemicellulose is derived. So this is the composition of cell wall in plant cell. Okay. फॉर्मेशन कैसे होती है? अगर सेल वॉल की, सेल वॉल फॉर्मेशन कब होता है? इट फॉर्म ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस इज व्हाट? इट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस. सो सेल वॉल फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस बाय द डिपोजिशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट्स. फ्रैग्मोप्लास्ट्स आर व्हाट? These are the pieces of endoplasmic reticulum and Golgi bodies. They get deposited in a particular place. और बोल सकते हो यहाँ पे जहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होती है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं and they form these phragmoplasts. What I told you that the cell wall formed by cytokinesis or during cytokinesis, ठीक है? cytokinesis से कब होगी? बाय फ्रैग्मोप्लास्ट. Fragmoplasts are what? These are the pieces of Golgi and endoplasmic reticulum which gets deposited and they then form a structure which is called middle lamella. From that middle lamella the cell wall formation takes place, ठीक है? तो वो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर में बताऊंगी. So this is the introductory part of the cell wall. Now next is structure of cell wall. कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का? सो वी विल स्टडी नाउ. आई नो मैं काफी डिटेल में पढ़ाती हूँ या काफी डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन अभी आपका जो पैटर्न है वो दैट इज सीबीएसई पैटर्न. सो इतना डिटेल में पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ठीक है? सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का? मैंने अभी आपको बताया दैट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द फ्रैग्मोप्लास्ट आर व्हाट? Golgi bodies and the endoplasmic reticulum, their pieces get deposited and they form a structure which is called as middle lamella. So what is this? This is middle lamella. Middle lamella is what? It acts as the bridge. It acts as a bridge to the two cells. Let us consider that this is the cell A and this is the cell B. Okay, so these two cells are combined or these two cells are get sticked with the help of a structure which is called as middle lamella. This structure acts as a bridge or a connection to two cells. Now around this middle lamella is present the primary cell wall. क्या present होगा? Primary cell wall. दोनों तरफ ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि दो सेल की बात हो रही है. ओके, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल हैविंग लेस सेलुलोज एंड मोर हेमीसेलुलोज. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज प्राइमरी सेल वॉल. डिपोजिशन कैसे हो रही होती है? अगर आप मैं आपको बताऊं, ये हम बाहर से अंदर की तरफ बात कर रहे हैं. This structure middle lamella is outside and then primary cell wall. Cytoplasm क्या करता है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज मटेरियल को excrete करता है and these help in the formation of this cell wall. Primary cell wall के बाद the another layer which is present is secondary cell wall. This secondary cell wall is divided into 3 layers. We'll draw here also. So what is this? This is the secondary cell wall.
3 layers, that is S1, S2, S3. ठीक है, 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस इसमें सिर्फ द अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज। कैसे कि हर एक लेयर में सेलुलोज का अरेंजमेंट कैसा होगा? अलग अलग होगा, सेम कभी नहीं होगा। इन सम इट इज लाइक दिस, लाइक दिस। सो हर लेयर में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। मैं सिर्फ यहीं पे शो कर रही हूँ। सो दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे that here a hollow structure is present. This structure is called as pit. क्या होता है कि सेकेंडरी सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? ये कुछ हॉलो स्ट्रक्चर्स बनाएगा एंड दीज हॉलो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पिट। क्यों प्रेजेंट होते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू टू सेल्स। यहाँ से दोनों सेल में मटेरियल्स जो होंगे वो पास करेंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। So it forms a structure which is called as pit. This area, this particular area is known as pit membrane. Pit membrane. Okay? So अगर हम pit की बात करें, मैंने आपको बताया that secondary wall, secondary cell wall forms structures which is called pit. This pit is of two types. One is simple pit. यहाँ पे आप देख रहे होंगे the स्ट्रक्चर पिट कैसी है? अगर आप देखो तो पैरेलल लाइंस की तरह, मतलब इनका एरिया जो है वो सेम है। सो दीज आर सिंपल पिट। सिंपल पिट इन विच द एरिया इज सिमिलर, सिमिलर बोल सकते हो, और एरिया इज पैरेलल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? सिंपल पिट के बाद क्या आ जाते हैं? बॉर्डर्ड पिट्स। बॉर्डर्ड पिट्स। बॉर्डर पिट की बात करूं, देखो सिंपल पिट तो ऐसे आ रही है ना, ठीक है, दीज आर सिंपल पिट्स। ठीक है, बॉर्डर पिट में क्या होता है? द बॉर्डर पिट आर लाइक दिस। फ्रॉम द एंट्री पॉइंट इट इज नैरो एंड जैसे जैसे अंदर जाओगे इट बिकम्स ब्रॉड। सो दीज टाइप्स ऑफ द पिट्स आर बॉर्डर पिट्स। Narrow at the start and broad at end. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली पिट क्या करते हैं? आपको डिफरेंशिएट करने में, किस टाइप का प्लांट्स प्रेजेंट है यहाँ। these help to differentiate. This simple pit is a characteristic of angiosperms. आगे जाके जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे उसमें आप देखोगे there are two types of the plants, two types of the and these are angiosperms and border pits are the characteristic of gymnosperms. Gymnosperms. So this is the pit or the function or their importance. After the secondary wall, there in some plants there is another layer is present and which is known as tertiary layer. This tertiary layer is not continuous. क्या होगा? Tertiary layer. Likewise here. So these are tertiary layer, tertiary cell wall. The function of tertiary cell wall is what? It provides additional strength to the plants. क्या करेंगे? ये additional strength provide करते हैं to the cells or to the plants. Okay. Now this tertiary cell wall, these are present in sclerenchymal cells. Sclerenchymal cells. ठीक है? So this is all about the structure of the cell wall. In primary cell wall, more cellulose and less hemicellulose is present. Okay, I wrote here that the primary cell wall has less cellulose and more hemicellulose. This is secondary cell wall. It has more cellulose and less hemicellulose. ठीक है? Sometimes more structured substances like suberin, lignin get deposited into the secondary cell walls. And in this tertiary cell wall, it consists of other substances or additional substances like lignin, xylin,
So these are deposited in tertiary cell wall. So this is all about the structure of the cell wall. Okay, I hope सबको समझ आ गया होगा. Now अगर हम बात करें the function of the cell wall, first is they provide protection. Sometimes अगर आप देखो लीफ में काफी इंपॉर्टेंट सरफेस, अगर आप सरफेस देखोगे काफी शाइनी होता है, तो दैट सरफेस इज शाइनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिन, another substance which are present in the cell wall. So first function is they provide protection. Strength provide करते हैं. Here tertiary cell wall it is present to provide extra strength. In some देखोगे आप some structures सेल वॉल के ऊपर क्या होंगे, एडिशनल मटेरियल जैसे हेयर या फिर समटाइम्स स्पाइन्स आर प्रेजेंट. दीज आर द elongations of the cell wall. Their primary function is also to provide protection. Now cell wall it helps in the movement of the substances with the help of these pits. ठीक है, hollow structure that is pits. One thing you must remember that कि अगर आप पिट का स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना सा एरिया बना रहे हो तो सेकेंड साइड भी या दूसरे सेल में भी इतना सा ही स्ट्रक्चर, इतना सा ही एरिया रखना है. क्योंकि अगर ये होगा यहाँ पे आप सेल यहाँ तक बना दोगे, यहाँ पे पिट यहाँ तक होगी, तो उससे मूवमेंट नहीं होगी. सो मूवमेंट के लिए पैरेलल स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना जरूरी है. सो और फंक्शन क्या आ जाते हैं, दैट इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी. देन सेल वॉल का और फंक्शन, it helps in the formation of these pits which helps to move the substances from inner to outside. From these pits cell wall के अंदर क्या होता है, cell membrane या फिर cytoplasm होता है. So it also makes the intact shape of that material inside it. Okay, so this is all about cell wall. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.